Hello viewers, welcome to my YouTube channel. You watch my YouTube channel Learn with Umar Draz. I hope you will be fine. In previous lecture, we have learned the conjunction and only types of conjunction. In this lecture, we will explain the type of conjunction in details. Conjunction falls into three types: coordinate conjunction, subordinate conjunction, and correlative conjunctions. Let's start our lecture and explain the types of conjunctions. Conjunction falls into three types: one, two, three. Coordinating conjunction, subordinating, and correlative. Conjunction falls into three types: coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunctions. We will explain them. Just to the, we will explain them into examples with examples. First types coordinating conjunction. A conjunction a conjunction with single words and links the words, phrases, and elements. For and nor both, for and nor both, or yet, ऐसे, so. Okay, for and nor both or yet so. For example, ये इसकी examples हैं. एंड एग्जाम्पल्स के लिए आपने एक ट्रिक याद करना है. फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बोथ,
ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। ओके, फैन बॉयज, ये क्योंकि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। We will explain its examples into sentence. For I have bought new car for you. He likes both apple and banana. मैंने इस कार को आपके लिए खरीदा है। He like both apple and banana. वो दोनों आम और केले को पसंद करता है। सेकंड टाइप्स है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इस type of conjunction include although, if, since, while, until, etc. ये इसमें आपने ये याद रखना है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल नहीं होते, और जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव, इनको आप शुरू से जहाँ भी इस्तेमाल करने के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनको आप फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बिकॉज भी आता है। बिकॉज आई woke up late in morning, I went to school without eating breakfast. मैं इसलिए लेट उठा क्योंकि मैं नाश्ता किए बगैर स्कूल चला गया। इसमें एंड आता है।
Both father and son loves cricket. Okay, we cannot explain our examples because I have small whiteboard. Sorry. इसके बाद आता है को रिलेटिव कंजक्शन. को रिलेटिव, a conjunction that have pair of words, a conjunction that have pair of words and work together for connects parts of sentences. A conjunction that have pair of words and work together for connect parts of the sentence. ये ऐसे conjunctions होते हैं जो कि एक जोड़ा होता है और ये इकट्ठे काम करते हैं और सेंटेंस को, जुमलों को आपस में जोड़ते हैं. एक जोड़ा होता है और ये इकट्ठे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर और नाइदर नार, not only but also. Both and. ओके, ये अल्फाजों का जोड़ा होता है, वर्ड्स का जोड़ा होता है और ये इकट्ठे काम करते हैं. इनको कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शन. को रिलेटिव यानी जो बहुत ज्यादा करीब हों. neither nor that he likes it. Both father and son loves cricket. दोनों बाप और बेटा क्रिकेट को पसंद करते हैं. बोथ एंड एक ही जुमले में आया दोनों और ये इकट्ठे काम कर रहे हैं एक जुमले को कनेक्ट करने के लिए. तो ये हैं को रिलेटिव कंजक्शंस. My dear audience, we have learned the conjunction and types of conjunction. Okay, I will meet you with will meet with you next lecture. Thank you. Best of luck.